Hello and welcome to Exam Chronicle. Today in this session I'm going to discuss the topic of direction and distance, and that is part 4, and this will be the last part of this topic. इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी इसके 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं, जिनमें कि मैंने बेसिक कंसेप्ट और टाइप 1 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं. इस पार्ट में मैं टाइप 2 एंड टाइप 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, that is type 2, finding the distance only. Let us move on to problem number 1. Problem says Vipul goes northwards 10 meters, he turns left and walks 30 meters, then he again turns left and walks 50 meters. How much distance Vipul traveled? How much distance Vipul traveled, right? हमसे ये पूछा गया है कि विपुल ने जर्नी के दौरान टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की. तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें सिंपली सारी डिस्टेंस को ऐड करके टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो 10 प्लस 30 प्लस 50 विल गिव 90 meters. That is option D will be the right answer for this problem. So टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम में यदि आपसे ये पूछा जाता है फाइनली विपुल अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, या पुल के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो उस मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करते वो कुछ इस तरह से होती. सबसे पहले हमें डायरेक्शन डायग्राम ड्रॉ करना होगा. Suppose this is the initial position of Vipul, that is point A, and he goes initially northwards for 10 meters, right? That is 10 meters, and suppose he reaches to this point, that is point B, and he turns left and walks 30 meters, right? Left turn is decided by anti-clockwise rotation, and he walks for 30 meters, right? Suppose this is the 30 meters distance and he reaches to point C after walking 30 meters, and then he again turns left and walks 50 meters. पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद फिर से वो अपना एक लेफ्ट टर्न लेता है और 50 मीटर्स चलता है, राइट? सो सपोज दिस इज द पॉइंट डी एंड इट इज द फाइनल पॉइंट ऑफ विपुल एंड ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ विपुल. तो हमें ये बताना है कि इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है. सो मिनिमम डिस्टेंस विल बी लाइक दिस AD, राइट? और मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर ज्योमेट्री की हेल्प लेनी होगी और हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा. सपोज दिस इज द पॉइंट E ऑन द लाइन CD, एंड इफ वी ज्वाइन द लाइन A and E, if we join the point A and E, we got a triangle that is ADE, right? Triangle ADE. Okay, right? And in triangle ADE, AE is equal to BC, that is equal to 30 meters. So right, AE is equal to 30 meters, right? And here we can say from the diagram that is AB is equal to EC, and AB is what, 10 meters, so EC will be also 10 meters. So right, this will be 10 meters, and we know the total distance of CD is 50 meters, and we know the distance between E and C, so we can calculate the remaining distance between D and E, that is 50 minus 10, that is equal to 40 meters, right? Now we have to calculate the AD, right? और AD को कैलकुलेट करने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल का एक बहुत ही फेमस थ्योरम यूज करते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल AB and C, AC will be the hypotenuse of this triangle, AB will be the base of this triangle, and BC will be the perpendicular of this triangle. And according to the Pythagoras theorem, in a right angled triangle, the hypotenuse square will be equal to base square plus perpendicular square, or we can say that hypotenuse is equal to under root of base square plus perpendicular square. So in this triangle ADE, our hypotenuse is what, AD, our base is what, AE, and our perpendicular is DE, right? Then according to Pythagoras theorem, the hypotenuse, that is AD, will be equal to under root of AE square, that is the base, plus perpendicular, that is DE square, right? So here AE is equal to what, 30 square plus 40 square, that is equal to under root of 2500, that is 50 meters, right? So this is the minimum distance between point A and point D.
तो विपुल के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 50 meters. So 50 meters will be the answer. So in this way we can calculate the minimum distance, right? Let us move on to problem number 2. Point H is 6 meters towards east of point D. Point R is 8 meters north of point G. Point Q is exactly midway between point R and point G. And point K is 10 meters to the south of point Q. Point L is 3 meters towards the east of point Q. And point S is exactly midway between point G and point H. So we have to draw the diagrams for all these points, right? So first statement says H is 6 meter towards east of point G. जो point H है वो point G के respect में east direction पे है 6 meters की दूरी पर, right? So suppose this is our point G, then point H will be in the east direction with respect to point G. How much meters? 6 meters. So point G के respect में point H east direction पे है 6 meters की दूरी पर, right? Then second statement says point R is 8 meters north of the point G. ठीक है, point R point G के respect में north पे है और कितनी दूरी पर है? 8 meters की दूरी पर है. Suppose this is the distance of 8 meters and here point R will be located, right? Point Q is exactly midway between point R and point G. This will be point Q which is exactly midway between point R and point G, right? यदि Q R और G के बीच में है और R और G के बीच की टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर्स, तो Q और R के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 4 मीटर्स. और वैसे ही Q और G के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? अगेन 4 मीटर्स, राइट? Then point K is 10 meters south of point Q. Q point से हमें साउथ डायरेक्शन पे 10 meters चलने पर कौन सा पॉइंट मिलेगा? पॉइंट K, राइट? सो Q से G तक के बीच की डिस्टेंस है 4 meters. 10 meters कवर करने के लिए हमें 6 meters और चलना पड़ेगा. दैट इज सपोज दिस इज 6 meters एंड वी विल रीच टू पॉइंट K, राइट? सो Q से K तक के बीच की टोटल डिस्टेंस है कितनी? 10 मीटर्स. और हमें ये भी पता है कि Q और G के बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर, तो G और K के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? G और K के बीच की डिस्टेंस होगी 6 मीटर्स. पॉइंट L इज 3 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q. पॉइंट Q के रेस्पेक्ट में पॉइंट L की जो लोकेशन है वो है 3 मीटर्स इन द ईस्ट. दैट विल बी आवर पॉइंट L एंड Q और L के बीच की डिस्टेंस दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 3 मीटर्स, राइट? And point S is exactly midway between point G and point H. और point G और point H के exactly बीच में कौन सा point लाई कर रहा है? That is point S. That is point S. तो G और S के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 मीटर्स. और S और H के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर्स, क्योंकि S G और H के exactly मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, राइट? Then question number 1 says if a person walks 4 meters towards the south from point L. ठीक है, यदि कोई पर्सन पॉइंट L से 4 मीटर्स साउथ डायरेक्शन पे चलता है, देन टेक्स अ राइट टर्न और उसके बाद एक राइट टर्न लेके वॉक्स फॉर अनदर 3 मीटर्स, फिर से 3 मीटर्स चलता है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से वो कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा. दिए हुए ऑप्शंस में से वो कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा, राइट? If a person walks 4 meters towards south from point L, this is point L, and from this point a person is walking towards south for 4 meters, right? So L point से south direction पे 4 meters चलने पर वो person किस point पे पहुंच जाएगा? That is point S. So point S will be the right answer here. None of this will be the right answer for this question. That is, then second question says if a person walks 8 meters towards north from point S, then which of the following points would he cross and how far will he be from point R? यदि कोई पर्सन पॉइंट S से नॉर्थ डायरेक्शन पे चलता है 8 मीटर्स की दूरी तक, तो यहाँ से यदि कोई पर्सन 8 मीटर्स की दूरी तक चलेगा तो एग्जैक्टली यहाँ पर पहुंचेगा, दैट इज दिस डिस्टेंस, दैट इज 8 मीटर्स. सपोज दिस इज ए पॉइंट O और हमें ये बताना है कि पॉइंट O पर पहुंचने के बाद उसकी पॉइंट R से कितनी दूरी है. पॉइंट R से उसकी दूरी होगी RO एंड फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से RO इज इक्वल टू QL और QL की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर्स, राइट? सो RO विल बी 3 मीटर्स. और पॉइंट S से पॉइंट O तक जाने के लिए वो किस पॉइंट से होकर गुजरता है? पॉइंट L से. सो L
and 3 meters will be the answer for this question, that is option number D, right? I hope आपको ये problem का solution समझ में आया होगा. Then problem number 3 says Molly traveled from point A to point B, which is 5 feet, right? He then traveled 6 feet to his right, and then he turned to left and went 4 feet. Finally, he again went 6 feet to his left. How far is he from the point B now? Right. So, suppose this is the starting point of Molly, that is point A. और प्रॉब्लम में हमें ये मेंशन नहीं है कि मॉली इनिशियली किस डायरेक्शन पे मूव करता है, तो हम किसी भी डायरेक्शन पे मान के चल सकते हैं. he then traveled 6 feet to his right. अब मॉली एक राइट टर्न लेता है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 6 feet, राइट? दैट इज 6 feet. And he reaches to point C. Suppose he reaches to point C after traveling 6 feet. Then turn to left and went 4 feet, right? लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 4 feet चलता है और पॉइंट D पर पहुंचता है सपोज, और फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेके कितने फीट चलता है? 6 feet, right? 6 feet and he reaches to point E. From the diagram we can say BE is equal to CD and that is equal to 4 feet. So B और E के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 4 feet. So option D will be the right answer for this problem. Let us move on to problem number 5. Syam walks 6 meters towards east, then turns right and walks 9 meters. Again he turns to his left and walks 6 meters. At what distance is he now from his original point? Suppose this is the initial point of Syam, that is point A, and he walks 6 meters towards east, right? और वो ईस्ट डायरेक्शन पे 6 meters चलने के बाद पॉइंट B तक पहुंच जाता है. ओके, राइट. देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 meters. B पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो एक राइट टर्न लेता है और 9 meters चलता है. दैट इज सपोज दिस इज 9 meters डिस्टेंस एंड ही रीचेस टू पॉइंट C. अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 6 meters. फाइनली वो लेफ्ट टर्न लेता है और 6 meter चलने के बाद पॉइंट D पर पहुंच जाता है. तो हमें ये बताना है कि उसके ओरिजिनल पॉइंट से उसके फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, राइट? सो दिस विल बी द डिस्टेंस, दैट इज AD. सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस AD. अब ट्रायंगल AED में वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस AD. डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि AE इज इक्वल टू BC एंड दैट इज इक्वल टू 9 meters. Because this distance is 9 meters, then AE will also be what? 9 meters, right? और डायग्राम से हमें ये भी पता चल रहा है कि AB is equal to EC, that is 6 meters, right? So EC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6 meters. Then we want to calculate the distance of ED. So ED will be calculated as, so ED की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 12 meters. Now we have a right angle triangle, that is AED, and its base is 12 meters and its perpendicular is 9 meters, and we have to calculate its hypotenuse. AD will be equal to under root of 9 square plus 12 square, that is equal to 81 plus 144 under root 225, that is equal to 15 meters. So AD will be 15 meters. So finally श्याम अपने initial point से 15 meters की दूरी पर है. A will be the right answer for this problem. Let us move on to problem number 5. Sheila and Bella start from their office and walked in opposite direction, each traveling 10 kilometers. Sheila then turns left and walks 10 kilometers. Bella turns right and walks 10 kilometers. How far are they now from each other? Right? Sheila और Bella अपने ऑफिस से अपोजिट डायरेक्शन पे चलना शुरू करती हैं और दोनों ही इनिशियली 10 meters ट्रेवल करती है, राइट? उसके बाद शीला लेफ्ट टर्न लेके 10 kilometers ट्रेवल करती है और बेला राइट टर्न लेकर के 10 kilometers ट्रेवल करती है. हमें ये बताना है कि फाइनली उन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, राइट? सपोज दिस इज द ऑफिस and Sheila and Bella goes in the opposite direction, right? If suppose Sheila goes in this direction, then Bella will go in the opposite direction, that is in the west direction, right? And both are traveling for 10 meters, right? Then Sheila takes left turn and walks 10 kilometers. Sheila is traveling in the east direction and
Bella is traveling in the west direction. After traveling 10 kilometers, Sheila takes his left turn, that is in this direction, and walks again 10 kilometers, that is 10 kilometers. Or Bella takes a right turn, that is 10 kilometers, right? That is 10 kilometers. So we have to calculate the distance between the two persons, that is Bella and Sheila. Suppose this point is A and this point is B. So we have to calculate the distance between A and B, right? Clearly we can say the distance between both two girls is 20 kilometers, because suppose this point is C, because A और C के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स और C और B के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स. सो A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 kilometers. So option D will be the right answer for this question. Okay, right. Let us move on to type number 3, finding both the direction and distance. Right. Problem number 6 says Mahima goes 10 kilometers north and then goes 6 kilometers south. Again she moves 3 kilometers in the east. At what direction is she now from original position and in which direction? Right. So सबसे पहले महिमा, suppose this is the starting point of Mahima, that is point A, and she goes 10 kilometers in the north direction, right? 10 kilometers चलने के बाद suppose वो point B पर पहुंच जाती है. Point B पर पहुंचने के बाद वो 6 kilometers south direction पे travel करती है, that is in this direction, and suppose 6 kilometers travel करने के बाद वो point C पर पहुंचती है. मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है स्टार्टिंग में? 10 किलोमीटर्स. और B और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर्स, बिकॉज C ट्रेवल्स इन दी साउथ डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर्स. एंड A और C के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 minus 6, that is 4 kilometers, right? Then again she moves 3 kilometers in the east. Point C पर पहुंचने के बाद वो 3 kilometers ईस्ट डायरेक्शन पे ट्रेवल करती है, राइट? सो C will move 3 kilometers in the east direction, that is 3 kilometers in the east direction, and suppose this point is D. At what distance is she now from original position and in which direction? So हमें ये कैलकुलेट करना है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, that is AD. Now AD can be calculated using the Pythagoras theorem, that is AD will be under root of 4 square plus 3 square, that is under root 16 plus 9, that is 25, that is 5 meters, 5 kilometers. AD will be 5 kilometers, and we have to tell the position of D with respect to point A in this direction, that is, so अपने original position से वो 5 kilometers north east direction पे है. So 5 kilometers north east, that is option number A will be the right answer for this problem. Now problem number 7, point B is 12 meters south of point A. Point C is 24 meters east of point B. Point D is 10 meters south of point C. Point D is 12 meters east of point E, and point F is 8 meters north of point E, right? So according to this statement we have to draw the positions of these points. Point B is 10 meters south of point A. Point A के respect में point B 12 meters किस direction पे है? South direction पे है. Suppose this is the point A, then this will be the point B, और A और B के बीच की distance कितनी है? 12 meters, right? 12 meters. Then point C is 24 meters east of point B. Point B के respect में point C 24 meters east direction पे located है. So point C will come here, और B और C के बीच की distance कितनी है? That is 24 meters, right? Point D is 8 meters south of point C. Point D की जो location है वो point C के respect में 8 meters south direction पे है. So point D will come here, and point C और D के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8 meters. Point D is 12 meters east of point E. Point D point E के रिस्पेक्ट में 12 meters ईस्ट डायरेक्शन पे है, मतलब point D ईस्ट डायरेक्शन पे है, तो point E किस डायरेक्शन पे होगा? D के रिस्पेक्ट में वेस्ट डायरेक्शन पे होगा, राइट? सपोज दिस इज point E. Point D is 12 meters in the east of point E, right? And point F is 8 meters north of point E. और point E के रिस्पेक्ट में point F कितनी दूरी पर है? 8 meters दूरी पर in the north direction, right? So this will be point F, और point F और E के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 meters. और point F is located in the north direction with respect to point E, right?
So this is the position of all the points. So point F will come exactly at the midpoint of B and C. Point F होगा B और C का midpoint. Question number 1 says, if a man has to travel to point E from point A through these points by the shortest distance, right? Which of the following points will he pass through first, right? व्यक्ति को पॉइंट ए से पॉइंट ई तक ट्रेवल करना है और वो भी शॉर्टेस्ट पाथ लेके, तो हमें ये बताना है कि वो व्यक्ति सबसे पहले किस पॉइंट से होकर गुजरेगा, राइट? सो यदि कोई व्यक्ति पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ए से बी, बी से एफ, और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? दिस वन विल बी दी शॉर्टेस्ट पाथ. तो सबसे पहले वो किस पॉइंट से होकर गुजर रहा है? पॉइंट बी से. सो पॉइंट बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. एंड द सेकंड क्वेश्चन सेज, if a man is standing facing north at point C, how far and in which direction is point F? तो हमें ये बताना है कि point C से point F कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन पे है, राइट? point C से ये कितनी दूरी पर है? Because FC will be equal to ED, then this direction will be equal to 12 meters, and F is located in the west direction with respect to point C. Now problem number 8. A person moves 15 kilometers in the east direction. Then he turns towards north and moves 4 kilometers. From here, he turns towards west and travels 12 kilometers. How far and in which direction is he from his starting point? Right? Suppose this is the starting point of the person, that is point A, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो 15 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ईस्ट डायरेक्शन पे ट्रेवल करता है, राइट? सो पॉइंट ए से ईस्ट डायरेक्शन पे 15 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के बाद सपोज वो पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, राइट? देन टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव्स 4 किलोमीटर्स, और नॉर्थ डायरेक्शन पे मूव करने के बाद वो कितने किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है. और सपोज 4 किलोमीटर चलने के बाद वो पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, राइट? फ्रॉम हियर he turns towards west and travels 12 kilometers, और यहाँ से वो पॉइंट सी से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ 12 किलोमीटर्स चलता है, और सपोज वो पॉइंट डी पर. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन पे है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, राइट? सो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन पे है? दैट इज इन दिस डायरेक्शन, northeast, and we have to calculate the distance AD, right? Then we have to draw a right angle triangle. Suppose this point is E. Now we have a right angle triangle, that is AE and D, और इस triangle में we know that ED is equal to BC, that is equal to 4 kilometers from the diagram, and AE can be calculated as AB माइनस BE, राइट? और डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि BE इज इक्वल टू DC, राइट? BE इज इक्वल टू DC, एंड दैट इज 12 kilometers. So the distance between A and E will be 15 minus 12, that is 3 kilometers, right? So this distance will be 3 kilometers, this distance will be 4 kilometers. We have to calculate AD. So AD can be calculated as under root of 4 square plus 3 square, that is 16 plus 9, that is 5 kilometers. AD 5 kilometers, right? So our answer will be 5 kilometers in the northeast direction. Option B will be the right answer for this problem. Okay, so this is it. And this concludes our direction and distance topic. I hope जितने भी problems मैंने discuss किए हैं उनके solutions आपको समझ में आए होंगे. यदि आपको ये lecture series पसंद आई तो प्लीज़ इन सारे videos को like ज़रूर कीजिए, share कीजिए अपने friends के साथ, और आप अपना feedback दे सकते हैं इन videos के बारे में कि ये videos आपके लिए कितने helpful साबित हुए और मुझे क्या improvement करना चाहिए इन videos को, ताकि मैं आने वाले और भी topics में क्या improvement कर सकूँ, राइट? सो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें. इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके.
इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज एग्ज़ाम क्रॉनिकल को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप एग्ज़ाम क्रॉनिकल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।